क्या सीखा था हमने लास्ट टाइम? कैलकुलेटिंग द बेसिक फॉर्मूला। ये हमने सीखा था नेक्स्ट टाइम। आज तो उसमें क्या क्या आया था, तो हमने उसके सम आज जो मैं सीखने वाली हूँ हमारा वो कंप्यूटर का जो लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें आप लोगों का 10 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा और आप लोगों को मुझे 10 मार्क्स का असाइनमेंट सेंड करना पड़ेगा। अगर जिसने भी सेंड नहीं किया तो उसका 10 में से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो टीचर ने मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे ऑन करना है और आप लोगों को बताया है ना, बताया है ना कि कैसे एप्लीकेशन को आप लोग ऑन कर सकते हो। जैसे आप लोग गेम डाउनलोड करते हो इसी आप लोग एक्सेल शीट डाउनलोड कर एक्सेल डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? एक्सेल डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल इसे लिखना प्ले स्टोर में एंड देन आप लोगों को डाउनलोड करना है। ओके, तो हमने नेक्स्ट टाइम क्या सीखा था? सम करना, एवरेज फाइंड करना, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, सीखा था ना। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा और काफी सारे स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म भी किया था और उसमें पीक भी सेंड किए थे। सो वेरी गुड बेटा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है सेल रेफ्रेक्सिंग। क्या है उसका नाम? सेल रिफ्रेक्सिंग। सेल रिफ्रेक्सिंग मींस उसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों को सेल में सम किया है। क्या किया है? आप लोगों ने सेल में सम किया है, तो उस सम को आपको सेम पोजीशन सेम ऑब्जर्व में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो सेकंड सेल में भी चेंजेस होना चाहिए। ऐसा कुछ आप लोगों को करना है तो आपके पास 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव मींस हम लोग सिंपल कहते हैं कि रिलेटिव किसे कहते हैं? हमारे कजिन है, हमारा ब्रदर है, सिस्टर है, वो क्या है? हमारे वन टाइप ऑफ रिलेटिव। तो यहाँ पे भी हमारे 2 कॉलम्स या 2 है, तो उसके बाजू में कौन सी रिलेटिव है? आपके पड़ोसी है तो वो वन टाइप रिलेटिव हुए, तो आपके बाजू में कौन से रिलेटिव हुए? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। हमने जो सीखा है इसमें आप लोगों को साइन अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे कि इंडिया की साइन रुपीस आती है ना, ऐसे अमेरिकी की साइन डॉलर आती है। तो ऐसा आप लोगों ने जो टेबल बनाया है उसमें आप लोगों को क्या करना है? टेबल में रुपीस की साइन है, आपने टेबल में रुपीस के साथ यहाँ पे लिखा है 23 एंड सेकंड रो में आपने लिखा है डॉलर साइन में 24 डॉलर। तो उसमें आप लोगों को सम करना है। तो आप लोग रिलेटिव साइन सेम रिलेटिव हो तो आप लोग इसे सम कर सकते हो, एवरेज फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइन हो तो आप लोग निकाल सकते नहीं हो। मैं आप लोगों को फर्स्ट एक वीडियो बताऊंगी एंड देन आप लोगों को परफॉर्म करके बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है ऑब्सोल्यूट वैल्यू। ऑब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे मैंने सेम बताया ना, ऑब्सोल्यूट वैल्यू मींस यहाँ पे क्या होता है? जो रेफरेंस है हमारा रेंज ऑफ द सेल कांस्टेंट होता है, यानी कि हमने जो साइन है टीचर ने कहा ना अभी आपके पास यहाँ पे डॉलर 23 एंड सेल में डॉलर 24 है। अगर इसका आप लोग सम निकालोगे तो सम में कैसे आएगा? डॉलर
25 एंड जो हमारी 25 वाली रो है वो है C1 में एंड नीचे वाली रो D1 में है। अब मैं इसका आंसर फाइंड करूंगी तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्ट सेल में वो डिफरेंट पार्ट है, सेल भी है, नेम भी है, टैक्स भी है, तो मिस वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते नहीं हो। हम अभी प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग मिस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पता चला हमारा आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम क्या है? सेल रेप्रेजेंटेशन। उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा? रिलेटिव यानी कि रिलेशनशिप। तो दो रिलेशनशिप सेम हो तो हमारा आंसर कैसा आएगा? सेम। ऑब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों की सेम पोजीशन हो, आप ब्रदर और सिस्टर है तो आप ब्रदर और सिस्टर में आप लोगों को कौन सी हैबिट्स है, कौन सी हॉबीज है वो सेम होती है, वो फाइंड करनी है। तो ऑब्जर्वेशन करते हो ना, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेट करना है। रुपीस है तो रुपीस की साइन के साथ रुपीस ही आना चाहिए, डॉलर है तो डॉलर के साथ डॉलर ही आना चाहिए। एंड देन हमारा थर्ड है मिक्स यानी कि डॉलर नंबर के साथ टैक्स अगर हम फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा? नो। 23 है एंड नाम है अभी नाम के साथ हम 23 का सम करेंगे तो फाइंड होगा? नो। नंबर के साथ नंबर जाएगा, टैक्स के साथ टैक्स एंड आप लोगों को जो भी डॉलर साइन के साथ डॉलर ही जाएगा। ऐसे मिक्स वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सी वन वीडियो। Relative cell referencing, absolute cell referencing, and mixed cell referencing. Let's see examples of each of these methods. Imagine that on this simple worksheet, we want to add together the price of a menu item along with its associated amount of tax in order to determine the total price that should be charged for the item. Using the delicious nachos as an example, we could accomplish this task by first clicking on cell D4, where we want the total to appear, typing the equal sign in order. देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दो डॉलर साइन है। क्या है? डॉलर साइन। 8.95 एंड यहाँ पे है आप लोगों को क्या है? यहाँ पे डॉलर साइन 0.63 है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग टोटल करोगे तो आप लोगों को कैसा मिलेगा? First, tell Excel that we wanted to calculate the value that will be displayed in the cell, and then typing B4 plus C4 in order to tell Excel that we wanted to add together the values contained in cells B4 and C4. After pressing the Enter key, Excel performs our requested calculation and displays the resulting total in cell D4. At this point, if we were to select cell D4 and use the fill handle to drag our calculation down to cells D5 and D6, we can see that Excel has correctly calculated the totals for the menu items appearing in rows 5 and 6 on our worksheet. The reason that these calculations are correct is that by default, Excel uses what is known as relative cell referencing whenever we पता चला डॉलर साइन के साथ डॉलर साइन गया, रुपीस लिखेंगे तो रुपीस के साथ रुपीस ही जाएगा। वैसे सेम रिलेटिव हो तो सेम हमारा साइन भी मिलेगा एंड सेम हम परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट copy a formula from one cell to the next. Put another way, Excel is aware of the relative positions of the cells whose values we are manipulating, and it automatically updates cell references accordingly. Recall that in cell D4, we instructed Excel to add together the values of cells B4 and C4. If we moved to cell D5, we will see
see that Excel has automatically updated the cell references such that the value displayed in cell D5 is the result of adding together the values of cells B5 and C5. Excel has similarly updated the row numbers for the calculation in cell D6. Again, this behavior is known as relative cell referencing. As a brief aside, you may have also noticed that Excel automatically formatted our results using the accounting number format. We could easily change this if we wanted to by using the number format drop-down box. However, in this case, the accounting number format seems appropriate for our purposes. Although relative cell referencing can be very useful, there are often times when we do not want Excel to behave in this way. For example, imagine that instead of providing the specific amount of tax for each menu item, we instead wanted Excel to calculate the proper amount of tax for us, given a particular tax rate. In this case, let's say that our tax rate is 7.5%. I think I will also use the percent formatting style in order to make our tax rate look a bit better, and I will also increase the number of decimal places to 2. Next, let's delete all of the existing values in our tax column, since we want Excel to calculate these values for us based on the tax rate. Moving to cell C4, I can tell Excel to calculate the amount of tax for the delicious nachos by entering the formula equals B4 times B1, where cell B4 contains the price of the nachos, and cell B1 contains our desired tax rate. When I press the Enter key, we can see that Excel has correctly calculated the tax for the delicious nachos. But if I use the fill handle, पता चला इसने क्या किया? यहाँ पे उसने एक वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू? टैक्स रेट की। यहाँ पे टैक्स रेट की उसने एक वैल्यू फाइंड कर दी और यहाँ पे लिख दिया, उसने टैक्स लिख दिया पॉइंट में परसेंटेज लेके। फिर उसने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया? हमारी जो B4 की रो है, यहाँ की इज इक्वल टू B4, उसके साथ उसने क्या किया? ऑब्जर्वेटरी यानी कि मल्टीप्लिकेशन किया इसके साथ, तो यहाँ पे B1 के साथ इसने मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन उसे यहाँ पे आंसर में मिला डॉलर साइन, क्योंकि उसके 1 के पास डॉलर था, तो उससे साइन भी क्या आएगी? सेम साइन। डॉलर साइन के साथ ही आप लोगों को आंसर मिलेगा। जैसे उसने आंसर यहाँ पे चेंज किया, तो सेम आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी आंसर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 1 टाइम यहाँ पे फॉर्मूला दे दी है, टीचर ने नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताया था। आप लोग जो भी नंबर यहाँ पे जो सेल में चेंज करोगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपडेट होके यहाँ पे सेल में ना आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके? handle to drag that calculation down to cells C5 and C6, we can see that Excel has now calculated the correct results for these two cells. देखा आप लोगों ने यहाँ पे डॉलर
The reason for this is that Excel is using relative cell referencing. Therefore, instead of using the tax rate value in cell B1, Excel attempted to use the values in cells B2 and B3 when performing the tax calculations for cells C4 and C5. In order to fix this problem, we can use what is known as absolute cell referencing. When we use absolute cell referencing, we are explicitly instructing Excel not to update the row numbers or column letters in a cell reference when we copy a formula from one cell to the next. In our current example, we can tell Excel to use absolute cell referencing by clicking on cell C4 and then selecting the reference to the tax rate in cell B1 within the formula. By then pressing the F4 key once, we can see that Excel adds a $ in front of the column letter and the row number. A $ in front of the column letter tells Excel not to automatically update the column letter when we copy and paste the formula, while a $ in front of the row number tells Excel not to automatically update the row number when we copy and paste the formula. After implementing absolute cell referencing for our tax calculation formula, if we now copy the formula to cells C5 and C6, we will see that Excel now performs the calculations correctly, since it is multiplying the fixed tax rate by the price of the current menu item. Note also that if we now change the fixed tax rate, the amount of tax for each item and the associated total price of each item will be updated automatically. Now, लास्ट में आप लोगों को पता चला क्या हुआ? उसने वैल्यू जो फाइंड की थी उसमें क्या किया उसने? यहाँ पे उसने लिखा इज इक्वल टू D4 मल्टीप्लिकेशन डॉलर साइन यानी कि उसने एक वैल्यू फिक्स कर दी है। कौन सी? तो बी सेल में है $1, तो ये वैल्यू है उसने यहाँ पे फिक्स कर दी कि हमारे पास जो B1 में है वही वैल्यू मेरे पास जो B5 B6 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे B1 में है। तो फिक्स वैल्यू इसमें करने के लिए उसने क्या किया? डॉलर साइन का यूज किया। उसकी शॉर्टकट दी है ऑब्जर्वेड वैल्यू को अपडेट करने के लिए F4 आपके बुक में भी दिया है कि रो कॉलम एंड रो रेफरेंस यू के प्रेस नेम को सेल रेफरेंस ऑब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू जो है उसने फिक्स करने के लिए उसने डॉलर साइन यूज किया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डॉलर साइन है फिक्स वैल्यू करने के लिए और बाद में उसे अपडेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी यूज की? F4। तो इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड वैल्यू। पता चला? So that if we now change the fixed tax rate, the amount of tax for each item and the associated total price of each item will be updated automatically. Now that we're familiar with relative and absolute cell referencing, we can take a look at mixed cell referencing. When we use mixed cell referencing, we are telling Excel to either hold the column letters constant but automatically update the row numbers when we copy and paste cells, or to hold the row numbers constant, order around those grid numbers. Next, I'll use the sum function to add together two neighboring cells. Before I press the Enter key, however, I'll select the reference cells and press the F4 key twice. As you can see, there's now a $ in front of the row number component of the cell reference, but not in front of the column letter component of the cell reference. We are therefore instructing Excel to automatically update column letters when our function is copied and pasted, but to hold row numbers constant. As I drag the formula from one row to the next, you will see that the result of the calculation does not change because Excel is holding the row numbers constant. If, however,
self-referencing, Excel will hold the column letters constant, but will automatically update the row numbers. If, for example, I update the input range inside of the sum function, such that the dollar sign appears in front of the column letter, but not the row number, we will see that the result of the calculation changes when we copy the function from one row to the next, but the results do not change when we copy the function from one column to the next. Again, this behavior is known as mixed cell referencing. पता चला लास्ट में उसने क्या किया, एक फिक्स वैल्यू दे दी। डॉलर साइन उसमें कांस्टेंट वैल्यू है, अगर डॉलर साइन कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए उसने क्या किया, अपडेट किया G8 में। G8 अपडेट करते हैं तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू हो जाती है। तो 1 के साथ 2 इज इक्वल, उसका सम क्या आएगा हमें 3। तो उसने ब्रेक किया था से सेम में, क्यों, उसने वैल्यू फिक्स कर दी है इसलिए। बाद में उसने सेकंड एक एग्जांपल बताया 1 के साथ 3, 8 वाली कॉलम थी G8 वाली, उसमें उसने G एंटर कर दिया, यानी कि सिर्फ वैल्यू उसने क्या ली, 3 की ही ली, 1 की नहीं ली। तो उसमें उसका आंसर क्या आया, 3, यानी कि 3 मल्टीप्लिकेशन 3, उसका आंसर सिर्फ 3 आया। सॉरी 3 उसने सम फिक्स किया था, ओनली 3 लिया था 3 एंड ब्रेक किया था, उसने मल्टीप्लिकेशन किया, 3 ऐड होकर उसका आंसर मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया, मिला 3 ऐड किया तो उसने मल्टीप्लिकेशन 2 हुआ यानी 6 हुआ, इससे आप लोगों को आंसर मिल गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 5 से ऐड हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज हमने क्या किया, 3 रेफरेंसेस सीखे, कौन से, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स वैल्यू। ओके, तो आज आप लोगों को जो पता नहीं चला तो आप लोग टीचर को कॉल बैक करके पूछ सकते हो, एंड देन टीचर आप लोगों को फिर से नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली करके आप लोगों को कैसे प्रिंट निकालते हो वो सिखाएंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, सॉरी रिजल्ट बनाना है। क्या बनाना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट बना